So by method of contradiction, we need to prove that under root 5 is an irrational number. As I said, first we need to assume the opposite to that statement which we are going to prove. तो हमें प्रूव करना है अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. सो हम यहाँ अज्यूम करेंगे कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है. लेट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. अब हम इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करेंगे. तो ये है कॉन्ट्रडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. तो इसको रैशनल नंबर अज्यूम किया, देन अगर ये रैशनल नंबर है, देन अंडर रूट 5 कैन बी. अब हम इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करेंगे. तो ये है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड या मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. तो इसको हमने रैशनल नंबर अज्यूम किया, देन अगर ये रैशनल नंबर है, देन अंडर रूट 5 can be expressed in the form P upon Q, where P and Q both P upon Q, where P and Q both P and Q both are integers and their HCF is 1. Their HCF is 1. And their HCF is 1. HCF is 1. Is 1. Because in the simplest form, a rational number is in the form P upon Q, where P and Q both are integers and their HCF is 1. So we are taking P upon Q in the standard form because we have assumed that under root 5 is a rational number, and every rational number can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and their HCF is 1. So assuming that, we may write it as P upon Q is equal to under root 5, or is equal to under root 5, or transpose Q to the other side we write P, or transpose Q to other side we write P is equal to under root 5 into Q, or squaring both sides, P square is equal to 5 Q square. Since P square is equal to 5 into something, so we can say that P square is a multiple of 5. For sure, P square must be a multiple of 5 because P square is equal to 5 into Q square. So it implies that P square is a multiple of 5. And if a prime number is a multiple of 5, we can say अगर P square मल्टीपल है किसी प्राइम नंबर का, तो उसका जो रूट है यानी P, वो भी मल्टीपल होगा उसी प्राइम नंबर का. फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. टू एक प्राइम नंबर है, वो टू एक प्राइम नंबर है वो जो 2 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है. तो हमने आपको ये बोला कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर से, तो वो नंबर भी 100% डिविजिबल होगा उसी प्राइम नंबर से. तो 2 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन 2 इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल. इसी तरह से 3 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन 3 must also be divisible by 3. Is that clear? तो p square is a multiple of 5 के बजाय मैं आपको थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा होगा, p is divisible by 5 लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर है. is so it implies that p is divisible by 5. ये हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको नेम करिए. फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव शोन दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर देन p by 5. ये हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको नेम कर दीजिए फर्स्ट. दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट. वी हैव शोन दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर देन p इज डिविजिबल बाय 5. नाउ अगर p डिविजिबल है 5 से या मल्टीपल है 5 का, एक ही बात होती है p इज डिविजिबल बाय 5 या p इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो हम जानते हैं कि p को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स सम नंबर n, वेयर n इज एन इंटीजर. बात समझ में आई आपके? p अगर डिविजिबल है 5 से, तो p मे बी रिटन एज 5 इंटू समथिंग. अब ये 5 टाइम्स n हम क्या करेंगे,
अब हम पुट करेंगे इसमें, इसको इक्वेशन बना दीजिए 1 और इसको बनाइए 2, क्योंकि रेफरेंस देना पड़ेगा हमें इक्वेशन का। और अब ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमने p इज इक्वल टू 5n लिखा है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। तो अगर p इज इक्वल टू 5n हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, सो वी गेट ऑन द लेफ्ट 5n होल स्क्वायर equals on the right 5q whole square equals on the right 5q whole square. Move on to the next page. लेफ्ट हैंड साइड पर 5n स्क्वायर है, सो वी में राइट इट एज 25n स्क्वायर, 5 स्क्वायर n स्क्वायर यानी 25n स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर, और ट्रांसपोज दिस 5 टू लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बी 25 इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर, और transpose this 5 to left hand side, it will divide 25, 25 upon 5 n square equals q square, or q square is equal to 5 will divide 25 5 times, we get q square is equal to 5n square. Because q square is written as 5 into something, that means it is confirmed that q square is divisible by 5. It implies that q square is divisible by 5. And if q square is divisible by a prime number, then q must also be divisible by the same prime number, as I have shown you few examples on the previous page. So q is divisible by 5. This is your third statement. From second statement, we have already shown that p is divisible by 5, and now in this statement 3, we have shown q is divisible by 5. So we may conclude from second and third, from second statement and third statement, we have p and q both are divisible by 5. But in our initial assumption, we have already assumed p and q both are integers and their HCF is 1. अगर उनका HCF 1 है तो वो दोनों 5 से डिवाइड नहीं हो सकते, ये कंफर्म है। अगर वो 5 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों, तो उनका HCF 1 नहीं है, और उनका HCF 1 है तो वो 5 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया, तो हम लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू अवर अजम्पशन पी एन क्यू आर को प्राइम, ये भी लिख सकते हैं पी एन क्यू आर को प्राइम, बिकॉज HCF का 1 होना मतलब है वो दोनों को प्राइम है। तो जो भी लैंग्वेज आपको इजी लगती है, बट अकॉर्डिंग टू अवर अजम्पशन पी एन क्यू are coprime, or P and Q have HCF 1. So there is a contradiction, and thus our initial assumption that under root 5 is rational was wrong, and hence under root 5 is irrational. तो ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन।